शानदार एपिसोड होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ पावर पैक्ड एपिसोड एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इन द फॉर्म ऑफ Anushka Trivedi. So I'll introduce her until everyone joins in. So she's a financial content writer. She's a content strategist creating some amazing content on LinkedIn. So it's a pleasure to be having you in this session, Anushka. Thank you so much. Kind of learned from you only. Thank you. Thank you. I'm super glad. And to the audience who's watching it, we would love if you could write in your names as well. We would love to greet you. अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग, फाइनेंशियल कंटेंट राइटिंग स्पेशली, एंड लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, कुछ भी क्वेश्चन है, जस्ट फील फ्री टू ऐड इन एंड आई विल टेक इट अप विद अनुष्का ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन. तो अनुष्का, स्टार्ट करते हैं चर्चा. मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि टेक Hmm. अस टू दैट डे वन ऑफ लिंक्डइन. कैसे स्टार्ट हुआ? क्या चेंजेस आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिससे मे बी न्यू पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन और पीपल हु वांट टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड, उनको इनसाइट्स मिलेगी? Okay. So it has all started in COVID itself. So I think हम्म. majority of us has started from there only. So राइट. I was really confused, like what to do, how to do. Like I was confused with my life itself. कि ओके. guys मुझे actually करना क्या है, and फाइनेंसेस में थोड़ा सा फाइनेंस में थोड़ा सा जो सब्जेक्ट का वाला जो फाइनेंस की मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए हम्म. थोड़ा सा मेरा अच्छी पकड़ थी स्टार्टिंग से. Because I belong to the finance background. I take in commerce, BCom, MCom, and then CIPCC. These kind राइट. of all the course. So I just quite added these two things, writing and finance. So it हम्म. has just started. और changes बहुत सारे मुझे दिखे अपने आप में. हम्म. स्पेशली राइटिंग में, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग में भी, बिकॉज जो हम पढ़ते हैं और जो हम एक्चुअली प्रैक्टिकल जो हम लोग देखते हैं या हम जो करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. तो मेन तो हम्म. डिफरेंसेस मुझे वही दिखे राइट. राइट. इंग्लिश में राइटिंग में. और जो बेसिक्स ऑफ राइटिंग था उसमें फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने लगे. सो हम्म. काइंड ऑफ यस. या, आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू जो आप लिंक्डइन पे लिखते हो, आई हाँ. थिंक दैट डेवलप्स अ लॉट कि आप यू राइट. विल सी द डिफरेंस ऑन योर फर्स्ट पोस्ट एंड योर पोस्ट नाउ, दैट यू नो हाउ मच इट हैज यस. इवॉल्वड दैट इट वे. हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यस. फर्स्ट पोस्ट एंड मुझे तो लगता है ये क्या लिखा था मैंने. हाँ, मेरे साथ भी ये था. लाइक व्हेन आई गो थ्रू माय फर्स्ट पोस्ट, आई एम लाइक शिट, व्हाट वाज आई डूइंग दैट टाइम. Yeah. पर आई थिंक वो एक जर्नी है. हम्म. या. नहीं, आप बोले. हाँ, मैं बोल रहा था कि एक जर्नी है. आई थिंक अभी लिंक्डइन पे वी सी अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो, लाइक हर प्लेटफॉर्म पे आई थिंक थोड़ा सा ओवरवेल्म भी हो जाता है कि फॉर हाँ. न्यूबीज स्पेशली कि इतना सब कुछ है, हम कैसे करेंगे, तो दैट हाँ. वे. बहुत बार होता है. जब नया नया लिंक्डइन ज्वाइन करा था, मैंने अकाउंट बनाया था, तो एवरीवन इज लाइक अ सीईओ एंड फाउंडर हाँ. and getting more than 100 and 200 and 300 likes and comments and earning more than a lakh per month. It was too overwhelming and too frightening, of course, because हम्म. it so self doubt बहुत ज़्यादा आता था उस टाइम पे. कैसा हो, राइट. कर भी पाऊंगी या ये. बट लेकिन जब जैसे धीमे धीमे स्टार्ट किया, जैसे जैसे एक अपने अपने से ग्रो होने लगे, तो हम्म. उससे फिर धीमे धीमे अपने आप ही वो चीज़ ऐसा लगता है कि हाँ अब उन्हीं के साथ में हो गए हैं. तो राइट. अब डर नहीं लगता. हाँ, बट हाँ, एज अ न्यूबी तो बहुत डर भी लगता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. एक हम्म. हमेशा आता है, स्किप कर राइट. छोड़ दें क्या. हाँ, वो डाउट्स डेफिनेटली. और कई बार ऐसा भी होता है, यू फील लाइक यू टेक पॉजेज ऑल्सो बीच में हम्म. जब थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है. बट आई थिंक इट्स ऑल, जो लोग भी देख रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल ओके बिकॉज इट हैपेंस विद एवरीवन. कई बार लगता है ना कि सिर्फ हमारे साथ ही तो नहीं हो रहा, हाँ. इट्स हैपनिंग विद एवरीवन, आई गेस. एंड एक्चुअली एक बात और होती है कि जब लोग कहते हैं कि बी कंसिस्टेंट, इट हैपेंस, वो चीज हम्म. विश्वास भी नहीं होती है उस टाइम पे. ऐसा हाँ, करेक्ट. इनका तो अच्छा चल रहा है, ये तो कहेंगे ही ऐसे. करेक्ट. 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 बट बिकॉज हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. हाँ, बिकॉज हर किसी का स्टेज अलग है. यू हाँ. कांट कंपेयर योर डे वन विद समवंस डे 300 बिकॉज वो एक अपनी एक्सपीरियंस के साथ बड़ा है एंड यू ऑल्सो विल हैव टू इन्वेस्ट टाइम, सो दैट वे इट्स परफेक्ट. कमिंग टू कंटेंट राइटिंग, लाइक कंटेंट राइटिंग में बहुत सारे लोग हैं, दे वांट टू ग्रो, दे वांट हाँ. टू क्रिएट देयर नेम, दे वांट टू क्रिएट पर्सनल ब्रांड, जिन्होंने दे हैव नो आइडिया अबाउट कंटेंट राइटिंग अभी एट दिस स्टेज. सो व्हाट वुड बी योर टिप्स फॉर बडिंग कंटेंट राइटर्स कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं? हाँ,
first of all is take start taking LinkedIn and these kind of platforms so seriously. Like Hmm. LinkedIn and Twitter, we have to take these two platforms too seriously because I Right. have grown through it. मतलब लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में फोकस करते हैं और बाकी इरिलेवेंट फेसबुक में लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बट मुझे लगता है ऐसा कि लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो एज अ कंटेंट राइटर. आई एम नॉट टेलिंग Hmm. other kind of businesses, but these two platforms are really better. And Right. एंड आई yes. थिंक दो धारी तलवार हो जाती है बिकॉज यू राइट ऑन लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड भी बढ़ रहा है और साथ में यू आर इनहांसिंग योर वर्किंग स्किल्स हाँ, लाइक थिंग दैट इज गिविंग यू मनी एज वेल दैट वे कम्युनिकेशन परफेक्ट इज रियली मैटर इन दैट हम्म टाइम, और वो हम्म सबसे ज्यादा हम लोगों को होल्ड बैक करती है कि दोनों चीजों पे हम लोगों को काम करना पड़ता है. एंड एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे तब होती है जब मुझे अपना भी कंटेंट क्रिएट करना है एंड क्लाइंट्स का भी कंटेंट क्रिएट. वो एक राइट बड़ा प्रॉब्लम है. क्लाइंट्स का प्रायोरिटी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मनी मैटर करने लगते हैं, पैसे राइट प्रायोरिटी देने लगते हैं, तो फिर अपना ब्रांड पीछे हो जाता है. बट हम लोगों को ये चीज़ हम्म सोचनी चाहिए कि पैसा भी वहीं से आ रहा है, लाइक क्लाइंट्स भी वहीं से आ रहे हैं, ब्रांड भी वहीं से बन हम्म रही है हमारी, तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ, आवर फर्स्ट हम्म ब्रांड. वेरी वैलिड पॉइंट आई थिंक ये होता है कि यू गेट कंफर्टेबल वंस यू हैव लाइक लेट्स से 5-6 क्लाइंट ना यू सी लाइक यू लीव पर्सन ब्रांडिंग एंड जब वो चले जाते हैं देन यू रियलाइज कि अरे यार शिट आई शुड हैव लाइक पोस्टेड इन द लास्ट 6 months और ईयर तो हाँ. आई थिंक इट्स बेटर कि वो चलता रहे साइड बाय साइड थोड़ा आई टेक इट एज अ बिजनेस आई थिंक कि आपका यस. बिजनेस ही है पर्सन ब्रांड हाँ, वो बहुत क्रूशल पार्ट है बिजनेस का. Correct. Now coming to agar based on your journey of writing on LinkedIn, what would be your observations that you have seen कि यार ये चीज़ काम कर रही है in हाँ. storytelling or what would be your tips for someone who is just going to write his or her post one on LinkedIn? हम्म. हाँ, अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एज यूजुअल सब लोग यही बोल रहे हैं Hmm. कि पिक्स बहुत मैटर करती हैं. Images के साथ हाँ इमेजेस correct के साथ बहुत मैटर करती है, और इररिलेवेंट इमेजेस भी डाल दो तो भी काम चले. हाँ बट आई रियली डोंट थिंक इट वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टर्म. hmm लॉन्ग टर्म पे मेरे ख्याल से दो चीजें मैटर कर रही है सबसे ज्यादा. फर्स्ट, जो आप क्रिएटिविटी है हमारी, वेदर इट इज बुक और इट इज hmm अ स्टोरी टेलिंग, है ना, hmm कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है. क्योंकि ब्रांड्स भी वही चाह रही हैं, इंटरेस्टिंग hmm कंटेंट ही हम लोगों को पुश करना है. तो अगर आप अपने आप को शो नहीं करोगे एज अ क्रिएटिव पर्सन, तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ काम आएगी आपके भी एज अ क्लाइंट बेस के लिए भी. और right दूसरी चीज़ की वैल्यू जो हम दूसरों को दे रहे हैं, जो हम बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि यार ये तो मुझे पेड में रखना चाहिए, ये तो मैं हाँ पेड कंटेंट बना लूँ, मैं उसमें बेचूंगी, मैं इसमें क्या करूँ. हाँ चीज वो हाँ आती है दिमाग में कि लाइक जस्ट क्रिएट अ कोर्स एंड सेल इट एंड हाउ इट वर्क्स. तो बट ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को इस पे करना चाहिए, कि काम करना चाहिए कि तो हम लोगों को फ्री वैल्यू जो हम लोग सीख रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो भी हम लोगों को फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए. तो ये मेन दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, और मेरे लिए तो hmm कराउजल फॉर्म ऑफ कंटेंट बहुत काम किया है फ्रॉम द okay स्टार्टिंग. फ्रॉम द hmm स्टार्टिंग मैंने स्टार्टिंग में मैं इमेजेस नहीं पोस्ट करती थी. आई रियली यूज टू पोस्ट टेक्स्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड carousel form of content, and carousel really works for me. राइट आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी इमेजेस वी ऑल नो आर वर्किंग एंड इसमें इरेलीवेंट इमेजेस बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक उससे मे बी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट तो मिल जाता है बट लीड्स और क्वालिटी जो लोग हैं दे हाँ. स्टार्ट गेटिंग अवे फ्रॉम यू बिकॉज देन दे रियलाइज दिस नो वैल्यू एडिशन दैट वे तो हाँ. इसमें काउंटर ये आता है कि इमेजेस परफॉर्म करें तो हम तो यूज़ करेंगे आई थिंक यूज़ करना इज़ नॉट बैड बट एटलीस्ट हाँ. रेलिवेंट हो उससे हाँ, अपनी स्टोरी पर से उसको बेस नहीं बनाए ना. मतलब ठीक है, हम्म एंगेजमेंट इंप्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो हम्म उसको लाइक उसकी एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए पर्टिकुलर. राइट जैसे एक 2 ही टाइम्स बार. पर वीक हो गया हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट कर दिया, लेकिन उसी पे बेस्ड है वो चीज थोड़ी हाँ नहीं सही है. और मैंने राइट ये चीज खुद ऑब्जर्व की है, मैं आपको सही बताऊं. मैंने सोचा कि यार एंगेजमेंट तो बिल्कुल आ ही नहीं रही, इंप्रेशन होने रहे, फोटो डाल के देखते हैं, फोटो हाँ के देखते हैं. तो मैंने कंसिस्टेंटली, मैंने 2 वीक से मैं फोटोज वगैरह ही पोस्ट कर रही थी. बट आई रियलाइज कि नंबर ऑफ लीड्स जो मेरे पास आ रही थी वो प्रोपोर्शनेटली बहुत कम हो गई. लाइक अर्लियर हम्म I used to get maybe 7 to 10 leads a week, but हम्म जब से मैंने इमेजेस पोस्ट करना शुरू किया है, आई एम जस्ट गेटिंग 3 to 4 leads a week.
और वो Hmm. भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो वो एक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, और ये बहुत की पॉइंट है न्यूबीज के लिए भी, जो वो लोग Right. इसको सोच, हाँ. सब लोग यही कर रहे हैं, हम भी करते हैं। बड़े क्रिएटर्स की बात अलग है, दे आर ऑलरेडी Hmm. स्टैब्लिश्ड, राइट, वो के तब भी लिए। कर सकते हैं बिकॉज़ उनको तो हर हाँ, पोस्ट पे आएगा हाँ, ही, लाइक। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अंकुर वरी को कैन पोस्ट 50 हाँ, 50 स्लाइड्स ऑफ पीडीएफ। राइट, वो लोग देखेंगे। नो वन हुँ, इज गोइंग टू रीड आवर स्लाइड, आवर 50 स्लाइड्स। राइट, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग योर करंट सिचुएशन एंड राइट। मूविंग अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज़ अभी तो अटेंशन स्पैन इतना कम है, स्पेशली मार्केटिंग में और हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग में, दैट यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट टू काइंड ऑफ हम्म, मेक अटेंशन ऑन योर पोस्ट हाँ, दैट वे। तो आई थिंक एंड एक और डिस्कशन पॉइंटर ये आता है कि इसमें a lot of people, like a lot of founders, a lot of people you must have also encountered कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं आज भी पर्सनल ब्रांडिंग से, मतलब दे हाँ, आर नॉट, दे आर हैविंग डाउट्स एंड आई थिंक, बट इसका जस्ट लाइक सबसे बड़ी केस स्टडी हो सकती है, एज यू सेड यू गेटिंग 7 to 10 लीड्स फ्रॉम योर पर्सनल ब्रांड, तो आई थिंक there's no need of outbound then because it's all inbound leads coming in. no, I don't have to ever focus on outbound leads. Right Hmm. now, I am focusing on outbound leads because I want to expand it. But Hmm. till now, I am writing since 2 years, and I didn't need it. राइट, एंड I आई थिंक think. हर इंडस्ट्री में हो सकता है ये, Hmm, true. ये चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिसेंटली हैड अ वर्ड विद, लाइक आई वाज हैविंग अ वर्ड विद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री, तो फाउंडर वाज टेलिंग मी दैट मेरी तो ऑडियंस ही नहीं है लिंक्डइन पे, बट आई थिंक मोर देन द इंडस्ट्री और द प्रोडक्ट और सर्विस इट्स अबाउट यू, बिकॉज आप Hmm, अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करोगे तो ऑडियंस तो बन जाएगी उसके अकॉर्डिंग। आराम around say हम्म। people love to know your part of a story now, like हम्म। how did you become a founder, how did you get हम्म। the idea of doing this, आप राइट। आपने ऐसा क्या अलग सोचा, क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा, वो सब हम्म। चीजें मैटर करती हैं ऑडियंस के लिए, वो एक लर्निंग हो जाती है ना। वी ऑल हम राइट। हमेशा ही बड़े लोगों की स्टोरीज क्यों पढ़ते हैं, लाइक बहुत सारे हम लोग मोटिवेशन उनसे क्यों लेते हैं। बहुत बार हम्म। ये होता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनकी कहानियां बहुत फेमस नहीं हुई हैं, बट दे आर रियली इंस्पायरिंग देन वेरियस राइट। others in the market. So it is हम्म। really important to create a personal brand to put an impact on your audience. राइट, 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 एंड उस माइंडसेट से देन पीपल फॉर स्टार्ट नोइंग यू एंड देन ग्रेजुअली आपकी प्रोडक्ट और सर्विस भी लोगों को पता चलने लगती है, तो दे स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट दैट, हाँ, दैट वे। डाउट इससे ये आते हैं बिकॉज पीपल आर सीइंग स्पेंडिंग ऑन पर्सनल ब्रांड इज लाइक एन एक्सपेंस, हम्म। हम्म। even it's spending a portion of time even, so it's राइट। like हम लोग अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लोगों को आई थिंक ऐसा लगता है, बट इट हम्म। इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन राइट, राइट, बिकॉज आई एक्सपेंस। थिंक मेक सेंस ऑल्सो, मैं इसको स्टॉक, मतलब एग्जांपल दैट आई गिव ये है कि यार यू आर रेडी टू पुट मनी इन स्टॉक्स, which is हाँ, like you are putting money in other people's company in their vision, but you're not ready to put money in your vision, मतलब एंड बोथ आर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज इवेंचुअली स्टॉक्स भी ऐसा नहीं होगा अगले दिन आपको करोड़पति बना देगा, और पर्सनल ब्रांडिंग भी ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन ही आपका बिजनेस एकदम थ्राइव हो जाएगा, इट विल टेक लाइक मंथ्स एंड ईयर्स टू काइंड ऑफ बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट दैट वे। सो राइट, स्टॉक्स में तो फिर भी डाउट्स हैं, फिर भी रिस्क डाउट्स है कि हाँ, कि वो नहीं कंपनी बंद हो सकती है। हाँ, वो बंद हो सकती है बिकॉज वो दूसरों का इंटरफेरेंस है ना उसमें, बट हाँ। अपने में हमारी पर्सनल ब्रांड में किसका इंटरफेरेंस है। एंड नो वन कैन आई थिंक टेक अवे पर्सनल ब्रांड, बिकॉज आप अगर लेट्स से आप पॉज भी लेते हो, then हाँ, also you can always come back, and even if you're doing a full time job also, तो like हाँ, corporates have this belief कि हम क्यों करें, हमारा क्या benefit होगा, मे बी हाँ, लीड्स से उनको कोई फायदा नहीं होगा, पर द मे बी इफ दे वांट टू स्विच देयर जॉब्स या उनको प्रमोशन चाहिए या उनको एकदम शिफ्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मेल्स टू एचआरस, देन इट्स हाँ, गुड टू हैव लाइक एचआरस आपको इनबॉक्स करते हैं कि वी हैव दिस हाँ, अपॉर्चुनिटी I, दैट I वे। I totally relate to that because मुझे भी बहुत सारे एचआर के खुद ही से मैसेजेस आते हैं कि हम्म। can we work as a freelancer, like even if you are not willing to work as a full time राइट। job, we राइट। can discuss on partial thing or we can discuss on freelancing thing. So राइट। he's an HR is ready to adjust, they are ready हम्म। to है ना, to have discussion.
only Hmm. because we have personal brands. Correct. Absolutely. It gives Uh, us power. absolutely, absolutely. So I think people watching this or will be watching this, अगर रुके हुए हो तो please start कर दो because Yes. I think 10-15 minutes या चलो आधा घंटा भी लेगा but it is definitely worth it is the message from here. Perfect. Now I'll come back to content writing. So कुछ ऐसे tools that you use as a content writer या for your personal brand as well which can be helpful for the audience. Well, can we relate? Are we relating it to the AIs? Yeah, yeah, that's completely like even Chat Well, GPT ka pro version, if it is helpful, then you can suggest. yes, but I have a lot to talk about AIs, but I think it's not about it. But Right. frankly speaking, I really don't use any tools except Grammarly Hmm. and inbuilt tool of the platforms like. Okay. So, I'm using scheduling feature of LinkedIn since when Hmm. it started. I haven't Right. used. That is a bliss, to be Yes. honest. I haven't used any other tool for scheduling these kind of my post. So Hmm. I don't think I can suggest any tool. For research, I can totally suggest newspapers and Hmm. news agencies and various news channels as well. Right. Social media channels basically. Like Hmm. I really prefer to follow Grow and other financial magazines as well. So I Hmm. can suggest only these tools. I use Grammarly and ChatGPT for my research and getting an idea like how the structure look like, and Right. nothing. Right. Amazing. So I think the biggest tool is your mind itself. Like if you have the mindset, then you just need tools to like make it easier for you. That Hmm. way you are the main हाँ, tool. एंड एक और जो इम्पोर्टेंट आई थिंक टॉपिक रहेगा शिफ्टिंग बैक टू लिंक्डइन लाइक आई थिंक लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत लोग करते नहीं है दे हाँ, डोंट इन्वेस्ट देयर टाइम इवन पीपल हु आर पोस्टिंग आर नॉट really spending time on making sure their banner is there or their हाँ, headline is optimized. So I think what would be your tips based on your like experience कि ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए हाँ, प्रोफाइल में. हाँ। तो मैं अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ. My search appearances was really low these days. Okay. Hmm. And I was really confused why my impressions is good, my engagement is good. Why Right. is why search appearances is really low? It's like a newbie. Like when I started, that search वो वाला search appearance था मेरा level. तो Hmm. आई वॉज रियली confused एंड मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही थी उसे इंक्रीज करने के लिए कीवर्ड्स ट्राई करना और वो पता है कैसे इंक्रीज हुआ. वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से इंक्रीज हुआ. लाइक आई हैव चेंज Hmm. फाइल इन अ बेट ऑफ समथिंग एंड मैंने अपडेट की अपनी प्रोफाइल को एंड इट हैज इंक्रीज लाइक दिस. like in one day it is I can see the change. So you Right. can see कि क्रिएटर्स जो बहुत ज़्यादा बहुत पहले से भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप न्यूबी हो तब भी चलो जो चीज़ लिखी हुई है तो लिखी हुई है अच्छी तो लिखी है. नहीं, ऐसा नहीं है. सच अपीयरेंस Hmm. पर बहुत सारी चीज़ों का लोग आप पे रीच कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से. बैनर हो गया. बैनर में लोग प्रेफर करते हैं कि मैं अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट लिखूं. तो Right. वो ठीक है बट इट हैज टू इट हैज मतलब उसमें ज़रूरी है कि आपकी जो सर्विसेज है वो पॉइंट आउट हों. आपकी बेस्ट कि एक क्लियरली पता चले. क्लियरली पता चलना चाहिए वो चीज़. और प्रोफाइल पिक्चर में भी मैंने देखा है कि बहुत सारी फैंसी पिक्चर्स लोग लगाते हैं तो वो चीज़ मैं हाँ. कभी नहीं करूँगी. साइडवेज और इधर-उधर एंड ऑल ऑफ पहचान में दैट. तो आओ आपके सामने से दिखे कोई तो ये तो वो है नहीं है, ये तो कोई और ही है. राइट. राइट. People has to recognize you, है ना. And hashtags are not there, where where people we talk about. Hmm. Like, Hmm. I talk Hmm. about these kind of topics. We really don't appreciate that. People really Right. don't that. So Hmm. these things has to be there. Uh, I think experiences people are not utilizing the experiences part of their LinkedIn profile. These kind of things are Hmm.
important and so basic and underrated. Right. I think जितनी but like जितने भी sections हैं, we should be utilizing all of them. And हाँ let's say प्रॉपर. experience में adding media, adding description, what you did, what you achieved, हाँ and साथ में told about फीचर. hashtag. हाँ, featured section very important. I think your CTA, like your, I think service ka CTA is the हाँ best form there. राइट. एंड अलॉन्ग विद दैट योर टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट हो सकते हैं और योर फनल हो सकता है उसमें बेसिकली. एंड एज यू सेड बैनर पे लाइक सर्विसेज लाइक एनीवन लाइक पीपल डोंट हैव टाइम सो मोस्टली दे वोंट रीड योर अबाउट सेक्शन दैट मच. दे विल हाँ जस्ट सी योर बैनर एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि what job is the person doing and will I get benefited if I reach out to him or her हाँ. that way. We can So say that banner section is a summary of our bio. summary of and it's Hmm. the most important because सबसे पहले आंखों में वही आता है the first thing that comes. परफेक्ट. सो जितने भी लोग देख रहे हैं नहीं करी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल 6 महीनों से सालों से सो प्लीज गो बैक टू योर प्रोफाइल एंड यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि हाँ यार मैं इसमें ये हाँ ऐड कर सकता हूँ ये ऐड कर सकती हूँ. एंड यू विल लाइक सी डिफरेंसेस एज यू टोल्ड ना 1-2 दिन में ही वो चीज़ें बदलने हाँ लगेंगी. हाँ बहुत ज्यादा जब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ अपना. हम्म. राइट. एंड मैंने भी देखा है लाइक व्हेनेवर आई अपडेट लाइक एंगेजमेंट भी बढ़ते हुए मैंने देखा है लाइक हाँ रीच ऑल्सो हाँ. increases and founders start searching for your profile like whatever your target audience is फिर वो हम्म टॉप पे आने लगती हैं हम्म. उस सेंस में. Perfect, perfect. चलो to the end section of this live तो एक rapid fire करते हैं just quick questions and That whatever. I thought it was a raw conversation. या It does तो रॉ ही so. है मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं किया है इट्स जस्ट व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड आई विल आस्क यू रिगार्डिंग लिंक्डइन एंड योर पर्सनल Okay. ब्रांडिंग. एंड देखते कोई हैम्पर नहीं है अनफॉर्चुनेटली पर चलो मजा आएगा. I'll सो try to answer it या efficiently. so my first question is what is the most frustrating thing about LinkedIn like one thing top. Irrelevant images. Yeah, that same high And five. one thing more, bragging about their successes like 1 crore, 2 crore, 5 crore views. हाँ Like हाँ that's मतलब टू मच it. ब्रैगिंग मतलब थोड़ा सा वो ज़्यादा ही ओवर हो जाता है ओवर हाँ पीरियड ऑफ पूरे टाइम. साल भर बात होती है कि 2 करोड़ कमाया. Hmm. Perfect. My second question is who is your favorite content creator on LinkedIn if you had to just name. Can you repeat? It's Yeah, I think. yeah. So my question is ki who is your favorite content creator on LinkedIn if you just had to name one creator. Name one. You? Arey, thank you so much. Let It's me super engage with glad. your Thank you so much. as well. Right. Thank you so much. बस यही मेरा मोटिव था रैपिड फायर का और कुछ तो. पहले बताना चाहिए था. Okay, so my third question is what do you enjoy more, being a content writer or being like a content creator? Like if you had to choose one, कि एक ही कर सकते हो आप, you can't Okay. do two. I think writing is the best part of me. I really love doing things. I really love writing. So if I had to choose one, I will definitely choose writing. Amazing. What time do you think performs better generally? What you have seen, is it like 9 to 11 a.m. in morning or evening time, according to your observation? In my profile, evening time never works for me. So it's Okay, all morning morning. slot. Okay, Yes. perfect. My last question is what is your like goal with person branding? कुछ ऐसा goal set किया है या content writing से, or maybe what is the next things you are planning with your work and stuff. So your goal basically. Well, I haven't shared it with anyone till now, but जब खुलासा हो जाए LinkedIn पे हाँ चर्चा पे. तो खुलासा मुझे लग रहा है. मैंने जब शुरू किया था तब मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे स्टार्टअप्स जितने भी स्टार्टअप्स हैं मैक्स टू मैक्स स्टार्टअप्स के साथ मुझे काम करना है जो भी फिनटेक में हैं. Hmm. Any how I can contribute with their growth. I really want to even for some days or some time, and I just personally meet to the founders and they're basically to work with the founders. Right. तो जब स्टार्टअप में काम करते हो ना आप तो फाउंडर्स के साथ में जो कन्वर्सेशन होती है वो ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सिखाती है आपको. तो Hmm. वो चीज़ तो दैट वाज माय प्राइमरी गोल फॉर दैट. Right. Amazing. एक क्वेश्चन आया है नितिन से, विल जस्ट टेक दैट अप.
how many posts have to share for beginners, and what should be the posting plan for the month? Actually, I usually prefer 5 to 6 posts a week. Uh, Hmm. for the beginners, you can start with at least 4 posts a week in an alternative day, but there has to be a consistency. Like if you're Hmm. posting in alternative days, you have to post on these days, like Monday, Wednesday, Tuesday, these kind of. तो कोई भी एक डे चुन लो, एक टाइम चुन लो, वो चीज एक वो कंसिस्टेंसी वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहे, मे बी 1 मंथ और 6 मंथ और 1 ईयर, देयर हैज टू बी देयर, Hmm. दैट हैज टू बी देयर. तो राइट, सो आई थिंक अगर मंडे, फोर. वेडनेसडे, फ्राइडे या सैटरडे 4 दिन भी सिलेक्ट कर रहे हो, देन यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट कि यार इस दिन तो पोस्ट जाना ही है इस टाइम पे. हाँ, और अभी बिगनर हैं तो एंगेजमेंट की कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, बिकॉज Hmm. देन शेड्यूलिंग इज नॉट विल नॉट गोइंग टू वर्क. राइट, तो लाइक अराउंड पोस्टिंग टाइम, आई थिंक. एंड 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट्स आफ्टर, दैट्स जस्ट. अमेजिंग. सो आई थिंक उसी से पूरा मंथ का प्लान बन जाएगा नितिन, कि वंस यू हाँ. रेक्टिफाई कि आई थिंक मंथ का भी नहीं करके बिगनर्स में तो वीकली भी अगर सेट कर लो कि मेरे को इस थीम पे हम्म. करना है, तो आई थिंक इट इज़ गुड टू गो. बट ये ना हो कि स्टार्ट कर दिया फिर छोड़ दिया, बट जस्ट मेक श्योर कि वो हाँ. चीज़ ना हो उसमें. हाँ, 15 डेज का वीकली प्लान कर सकते हैं. 15 डेज का फाइनेंस कंटेंट अगर आप बना रहे हो, आई रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट नितिन इज टॉकिंग अबाउट, बट हम्म. इफ इट इज फाइनेंस कंटेंट, वी रियली कांट प्रिडिक्ट आवर कंटेंट लाइक 1 मंथ बिफोर, बिकॉज हाँ. बहुत ज़्यादा चीज़ें चीज़ें हो रही होती है न्यूज़ में, एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आती है फाइनेंस राइटर्स के साथ में, हम्म. कि हम लोग प्लान कर लेते हैं एंड कुछ ऐसा हो गया जो वो प्लानिंग तो किनारे हो गई, एंड वी हैव टू क्रिएट समथिंग एल्स. राइट. So, if you are a content writer, you can create a way that weekly plan would work the best. बिकॉज इवन इन मार्केटिंग आई थिंक ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, सो यू हैव टू लाइक केटर टू दोज ट्रेंड्स एवरी वीक, एंड आई थिंक वीकली हाँ. प्लान इसलिए बेस्ट भी रहता है बिकॉज हाँ. हेडेक भी कम है, आपकी प्लानिंग भी थोड़ी सी कम है एज अ बिगिनर, हाँ. एंड यू कैन अडॉप्ट टू ट्रेंड्स एज वेल दैट वे. Yes. पर ट्रेंड्स भी अच्छे वाले, रिलेवेंट इमेजेस वाले मत फॉलो करना. अमेजिंग, अमेजिंग. I think I think जो लोग images बहुत ज़्यादा upload करते हैं, they must be angry with us. या आई मीन उनके लाइक देयर कैन बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, बट हाँ. ये तो जनरल लॉजिक ही है कि अगर आपका रिलेवेंट होगा, वो खुद को उनको पता रहता है कि दे आर पोस्टिंग इरेलीवेंट इमेजेस, बट जस्ट फॉर एंगेजमेंट दे आर गोइंग, चलो ठीक है, वो भी हाँ. रियलाइज करेंगे ये बाद में कि एक दिन एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, हाँ. फॉलोअर्स बढ़ा. Yes, 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 absolutely. चलो perfect then. It was amazing talking to you, Anushka. काफ़ी candid चर्चा, सही है. काफ़ी candid थी, and I'm sure जितने भी लोग देख रहे हैं देखेंगे बाद में जाके, recorded रहेगा, post भी होगा दोनों की feed पे, तो अगर कुछ भी सीखने को मिला, आई वुड रिकमेंड, अगर बिगिनर हो स्पेशली, इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेके हम दोनों को टैग करो. वी विल पर्सनली सपोर्ट यू इन योर जर्नी, एंड वील बी हैप्पी टू नो Yes. कि एक भी अगर किसी ने स्टार्ट करी इस सेशन को देख के, देन आई थिंक द मोटिव इज अचीव. हाँ. Yes, objective is just fulfilled. Yes, absolutely. So perfect. Thank you, Anushka. Thank you, audience, and take care until next time. We'll see you very soon. Yeah, so excited for the next time as well. Sure, absolutely. Looking forward. Chalo. Thank you so much. Bye bye.